फोटोग्राफर है ये बबीता जी। साथ में आदित्य सर बोला मचाओ मचाओ बोला अरे लवली बोलो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। एवरीवन प्लीज सेटल डाउन। ओके, जिसको भी सवाल है प्लीज अपना हाथ ऊपर कीजिए, हम आके माइक दे देंगे और फिर स्टार्ट कर सकते हैं। मोदी आदित्य, फर्स्टली ऑब्वियसली जैसे मैंने शो देखा, और क्या वाकई में आपका शू साइज 12 नंबर है? जी हाँ। तो ये शू साइज आसानी से मिल जाता है इंडिया में? हाँ मिल जाता है, एक्चुअली आजकल मिल जाता है। अर्लियर भी आई वुडंट गेट माई साइज, बट नाउ डेज आई थिंक I don't know if our average height as a nation has grown, but they're available. Aditya, in terms of your career, you've been around, I think, for over a decade now. Yeah, and आपके लिए ये शो, आपके करियर के लिए इसने क्या किया है? अभी पता चलेगा, अभी रिलीज हुई है। आई थिंक इट्स डेफिनेटली समथिंग आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ। वर्क आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ, शो आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ। आई थिंक it doesn't come around very often when something really connects across the board. I think it's been overwhelming, the response that the show has gotten. So yeah, I think to find out what it's done, I think you have to look into the future to see. But for me, I think this is definitely one of those milestones as far as my career is concerned. Yeah. My question to the director is, I think it's a no-brainer that The Night Manager merited an Indian adaptation. लेकिन obviously जब आप एक डिसीजन लेते हैं इसे अडेप्ट करना है, और फिर उसे obviously किस तरह in the context of Indian scheme of things, especially in terms of the developing a character like Shelly Rungta and the creating his empire and the clientele, because obviously given that the kind of politics we have in the region, I think शायद 2 बार सोचना पड़ता है कि, और आपने जो शो की शुरुआत की है उसमें आपने शुरू में रोहिंग्या क्राइसिस का जिक्र किया है। तो सर इस चीज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? शायद आपको सवाल कुछ देर के बाद वापस रिपीट करना पड़ेगा। मैं कुछ पूछने वाला हूं। सबको ठीक लगा? ठीक लगा? ये अनिल सर का अद्भुत आइडिया था। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सब जगह सिर्फ क्रिटिक्स को दिखाते हैं, पर मीडिया वालों को सबको देखना चाहिए हमने जो काम किया है। उसके बाद शायद वो ऐसे सवाल पूछे जो देखने वाला ही पूछ सकता है, राइट, जिसने देखा होता है। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अनिल सर फॉर दिस ब्रिलियंट आइडिया। आई थिंक इट्स वेरी रिस्पेक्टफुल दैट हम एक मीडिया को एक फॉर्म की तरह देखें और सबको इक्वल रिस्पेक्ट से और प्यार से देखें। और आज अनिल सर ने ये डिसाइड किया कि नहीं, ये एपिसोड हम पहले सब मीडिया के भाइयों और सब एवरीवन विल बी एबल टू सी इट टुगेदर। और आई थिंक ये पहली बार हुआ इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट इन माय शॉर्ट करियर। सो आई एम हैप्पी एज लॉन्ग आप लोग सबने देखा और बाहर आई हुई है। सो आई होप आप सब अपनी नाव लाए हैं।
to go back. It's and you guys are here at this hour, which is very important for me. So सवालों से पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये चीज जो अनिल सर ने ये पहल ली और आप सब लोग आए. तो और एक बार पूछ रहा हूँ, ठीक लग रहा है कि नहीं यार? मेरा यहाँ पे टेंशन आ रहा है, कोई बता दो. हाँ, हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो वो एक सीन के बारे में थोड़ा कुछ नहीं. सो आई थिंक ये बहुत जरूरी था कि, और ये एज आई सेड आप लोग ने देखा कि ये कितना इंपॉर्टेंट एपिसोड था, है ना? कितनी सारी चीजें बदल रही थी, कितने सारे नए रिलेशंस खुल रहे थे. अनिल सर का अलग रूप, आदित्य का अलग रूप, तिलोत्तमा के कैरेक्टर के लिए एक अलग नया पहलू ओपन हो रहा है. सो देयर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग. सो आई वुड से दिस इज द एपिसोड विच चेंजेस एवरीथिंग. सो आप लोग ने यू सीन इट. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आप लोग को क्या लगा और आप लोग किस तरह के अभी नाउ सवाल पूछेंगे. मैं भी आप लोग को जज कर रहा हूं जैसे आप लोग ने इस शो को जज किया. सो मयूर जी, आपके सवाल पे वापस आता हूं. आपको एक बार वापस आप रिपीट करेंगे प्लीज ये क्वेश्चन. Yeah, so basically what I was asking that, it's a no-brainer to adapt the Night Manager into an Indian series. लेकिन obviously जो I think पहला challenge ये रहा होगा कि इसे इंडिया में किस तरह, how to fit it into the Indian scheme of things, and especially the idea of an Indian arms dealer, जो कि I think जो मेरी limited knowledge में इतना हमें सुनने को नहीं मिलता, because normally इस चीज़ों में westerns, Africans वैसे लोग रहते हैं. सो बेसिकली इस किरदार को जो डेवलप करना, उसका बिजनेस एंड स्पेशली द क्लाइंटेल. शो का जो पहला एपिसोड है उसमें आपने रोहिंग्या क्राइसिस उससे शुरुआत की है. तो इस चीज पे सर मेरा सवाल यही था. देखिए मयूर जी, ये जो आप बातें पूछ रहे हैं ये मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 एपिसोड्स. बट एक बहुत ही शॉर्ट में कहूंगा दैट कहानी इतनी अद्भुत है कि उसे अडेप्ट करने के लिए जो उसमें वहां पे रस था वही रस यहाँ ढूंढा है. और एंटरटेनिंग लगी है. फर्स्ट 4 एपिसोड्स हैव बीन लव्ड बाय एवरीबडी एंड या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नोइंग नाउ कि आप लोग को 5th एपिसोड कैसा लगा. दैट्स माय की क्वेश्चन नाउ. सो ओवर टू यू गाइस अगेन. सवाल ही नहीं है, इतना अच्छा शो है. यस सर. अनिल जी, किसके लिए? अनिल सर के लिए, मेरे के लिए. थैंक यू सर. बड़े पर्दे पे देखने का जो एक अनुभव रहा बहुत ही अच्छा रहा. संदीप जी, आपसे जानना चाहूंगा, हमने आज ये जो स्क्रीन पे देखा 70 में, कहीं आपके दिमाग में ये कहीं आया है कि लेट्स मेक इट सीन्स? सच कहूं तो आज आ रहा है आप सब लोग को देखकर और आप लोग के रिएक्शन. मुझे दिख रहा है कि अभी आप लोग क्योंकि कैमरा हाथ में है तो इसलिए ताली नहीं बजा पा रहे हैं शायद, प्यार इतना व्यक्त नहीं कर पा रहे. बट आई फील कि हाँ, ये ऐसा कहे तो पर्दे की साइज पे लिमिटेड ये कहानी नहीं थी और ये परफॉर्मर्स नहीं है. ये कोई भी पर्दे की साइज दो आप, इंचेस हो या 70 mm हो या कोई भी हो, दे आर गोना टेल द स्टोरी विद द सेम पैशन एंड फायर, एंड दैट्स द थिंग अबाउट द टीम. सो आज बिल्कुल आ रहा है ये फीलिंग कि हाँ, काश ये ऐसा कुछ करें. हॉटस्टार के भी कुछ लोग हैं और ये सुन रहे हैं हमारी बातें, तो क्या पता कुछ दिनों में ऐसा भी अनाउंस करें आप लोग को और एक बार बुलाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहें कि चलो इसको बड़े पर्दे पे भी देखते हैं. Hello. Hi guys, my name is Mohit. Hi, right here. Mohit from AVS. First, let me tell you, we all loved this show. The 5th episode is amazing, and I'm sure I say this on behalf of everyone that we are looking forward to know what happens next. Thank you. I want to talk about this gentleman at the center of this, Anil sir. What a fabulous actor. All the 3 artists with Anil sir, I want to ask you this. When you work with such an amazing actor, I'm sure there are a lot of learnings, but I want to know what is that one pro and one flip side of working with this dynamic actor. Let's start with Aditya first. I think the only flip side is you get a complex that you don't work hard enough. Because I think Sir is definitely the hardest working person in the room. I'll use the other mic. I can think of only that as the con, yeah. Because you always feel like, shit, I need to pull my socks up. I think it's, yes sir, every mic has a problem. Huh? No, yes, सही है. Bad weather. So yeah, I think there's too much to learn from Sir. I think across the board, I think Sandeep will have his own stories to tell. I am fortunate enough to have gotten the opportunity to work with Sir on a second project, and he never ceases to kind of amaze you with
I think you've heard it all before, but it really is true. I think the zest with which he kind of approaches his work, the passion with which he approaches the role, the attention to detail, and also the kind of being a team player and wanting everyone to succeed, to have the overall wisdom and want for everyone to succeed so that the whole thing succeeds, and then so does, everyone kind of benefits. So I think Sir's experience and love has been invaluable on this project, I think, and I can speak for everyone, without any thought. Sobhita's here. Sobhita ji, please come, ma'am. ऑडियो सो अनिल जी ऑन योर लेफ्ट एंड हाय। सो सवाल ये है कि अनिल जी सवाल ये है कि इंडस्ट्री में आप सबसे ज्यादा किसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, एंड अगर आपको उन्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी हुई तो वो क्या होगी? सवाल काफी अद्भुत है। थैंक यू। मतलब ट्रस्ट मतलब क्या, मतलब मैं समझा नहीं, मतलब कि सब पे इंडस्ट्री में बहुत सारे आपके दोस्त हैं, काफी करीबी दोस्त हैं। काफी जो आपके करीबी दोस्त हैं काफी सुपरस्टार भी हैं और सभी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, एंड यहाँ पर पूरी टीम आपकी सारी बहुत ही अच्छी है नाइट मैनेजर की। तो सबसे ज्यादा आप ट्रस्ट आंख मूंद कर किसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं? किस सिलसिले में? कुछ भी, वो आप बताएंगे। मतलब काम में एंड आपके दोस्ती में, एंड तो इस वक्त क्या, मतलब काम के बारे में कहूँ, दोस्ती के बारे में कहूँ, किसके बारे में? कुछ भी आप बोल सकते हैं, दोस्ती के बारे में बोल सकते हैं, काम के बारे में बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। एक चीज जावेद साहब ने कही है हमेशा, और मैं सबसे कहता हूँ ये, विच मेरे जहन में रह गई वो बात, जावेद अख्तर साहब के, और ऋषिदा भी कहते थे, ऋषिदा के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तो वो यही कहते थे कि यार काम करते रहना चाहिए, साथ में काम करते हैं तो फिर मिलना जुलना, बातचीत, चाय, कभी कभी घर पे आना जाना, डिस्कस करना, पैकअप के बाद वैनिटी वैन में बैठना, इन बिटवीन शॉट्स में बातचीत करना, तो ये दोस्ती कायम रहती है। फिर जब फिल्म ख़त्म होती है या शो ख़त्म होता है, फिर सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, सब बिजी हो जाते हैं, कोई दूसरी फिल्म में काम कर रहा है, कोई दूसरी चीज़ों में बिजी हो जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो बोलते यार चलो यार मुझसे स्क्रिप्ट मत लिखाओ, गाने तो लिखवा लो ताकि आपसे मुलाकात चलती रहे। और ऋषिदा हमेशा कहते थे कि फिल्म और एक शो एक ऐसा होता है, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो जैसे हम ट्रेन में जाते थे ना, जैसे बॉम्बे से दिल्ली जाते थे, तो एक ही कंपार्टमेंट में काफ़ी लोग बैठते थे, और सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में जब भी वो जो, तो उनसे दोस्ती हो जाती थी, प्यार मोहब्बत हो जाता था, खाना पीना साथ में होता है, बातचीत होती है, और हम लोग फिर दादर स्टेशन या वीटी स्टेशन जहाँ भी उतरते थे बोलते हैं फिर मिलेंगे। और जैसे ट्रेन चली जाती, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, और हम एक दूसरे की फिर मिलते नहीं हैं मोस्टली। सो मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि काम करते रहना चाहिए साथ में, और मेरी खुशनसीबी है कि काफ़ी लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया, काफ़ी डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ बहुत सारी फिल्में की हैं, एक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने 12-12, 13-13 फिल्में की हैं, हीरोइंस हैं जिनके साथ मैंने 12-12, 13-13 फिल्म की हैं, अभी आदि के साथ मैंने 2 फिल्में की हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इनके साथ और भी काम करूँ, संदीप के साथ और काम करूँ, पता नहीं शोभिता काम करना चाहेगी कि नहीं, पता नहीं। शोभिता है ना, मुश्किल है ना। तिलोत्मा का तो आई नो शी विल 100%, एंड रवि तो मेरे जैसे पुराने चावल हैं,
काफ़ी साल से अरसे से काम कर रहे हैं और इनके साथ पहली बार काम किया। इनके डैडी को मैं जानता था, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे एंड तो दोस्ती है, काफ़ी लोगों से दोस्ती है और दोस्ती रहती है। ज़रूरी नहीं होता कि रोज़ मिलना बातचीत करना, मगर हम लोग जब 5 साल या 10 साल या कभी प्रीमियर पे मिलते हैं और कभी कभी पार्टी पे मिलते हैं तो उसी तरह मिलते हैं जैसे कि बहुत अरसे से मिले हुए हैं। एंड ये बिना ट्रस्ट के तो लाइफ ही नहीं है। ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे कि मैं जब काम करता हूँ तो मेरे पे संदीप पे मेरे को पूरा ट्रस्ट है कि संदीप जो है वो ऐसा ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। सो जब वो ओके करता तो मैंने कितनी बार मॉनिटर पे देखा होगा संदीप, हार्डली। संदीप मुझे बुलाता था कि अनिल आगे देख ले, तो मुझे इतना ट्रस्ट था कि मैं मोस्टली 99.9% मैंने कोई शॉट देखा ही नहीं है। कभी कभार थोड़ा कंटिन्यूटी के लिए या कभी कुछ ज़्यादा अच्छा शॉट दिया तो बोला था यार आगे देख ले, बट यूजली आई हैव नेवर, इतना ट्रस्ट है मुझे संदीप साहब पर। और जैसे हमारे जो चैनल जिस तरह जो हमारा प्लेटफॉर्म है हॉटस्टार, डिज्नी प्लस, उन पे मुझे पूरा ट्रस्ट है। अब तक मेरी जब पहली बार जब शो शुरू हुआ था उनसे बात हुई, उसके बाद ज़्यादा बात ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने किया, उन्होंने जो भी किया शो के लिए अच्छा ही किया होगा। तो मेरे को पूरा ट्रस्ट है कि जो भी आदमी, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है इस फिल्म के अंदर, उस पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो बिना ट्रस्ट के फिर वो थोड़ा खटास रह जाती है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू ट्रस्ट पीपल हुम यू आर वर्किंग विद। एंड कभी कभी बिट्रेल हो जाती है, वो बहुत कम होता है। अब आपको दुख भी होता है, बट मैं इस तरह का इंसान हूँ कि रात गई बात गई, नेक्स्ट डे आई फॉरगेट अबाउट इट एंड आई मूव ऑन एंड आई एम एज वार्म एंड एज फ्रेंडली। मैं चीज़ें को आई डोंट रियली होल्ड ऑन टू इट। काफ़ी लंबा आंसर दे दिया ना मैंने? अच्छा था। अच्छा था, थैंक यू। Sir, Prabhat from Filming and Aditya, this side. Sir, you have done wonderful films throughout your career, but one film, Aashki 2, was favorite with the viewers as well as might be you be loving the film. So Aashki 3 is coming, Karthik and Fatima has been finalized. So do you think they can do the same magic as you and Shraddha ma'am have done on screen? No, why not? Yeah, but it's been Karthik and Fatima, is it? Yeah. Yeah, no, for sure. I mean, when I first heard of it, I think people asked me if I wanted to be a part of it, but the second part I took a long swim, at the end of the film. So I don't think that character can return for a sequel. I think the team that they're putting together, from whatever I'm hearing, is a great team, and I'm really looking forward as a film watcher to see what they do with the next part. I'm sure they'll do a great job. Yeah. Hi. Aashki 4 मेरे साथ बन रही है, by the way. Hi, this is Dipali. I have 2 questions actually. One is for Anil Kapoor sir. I wanted to know from you, ये जो role Shelly Rungta का है, it's almost, the character is almost, he's very confident, he's overconfident in some ways. And I read somewhere that you said that any role that you take, you're always slightly, apprehensive about it. आपको लगता है कि will you be able to perform it to the best of your ability or not? So when you have a character like this who's overconfident, does that take any special prep from you? Certain roles, yes, need a lot of prep, and something which some roles which are completely opposite to your personality. Right. Because in real life, I'm not that overconfident. I'm not that flamboyant. I'm not so power hungry. I'm not, that I will go to any extent to achieve what I have to achieve. It's completely opposite to I am very, very people's person. I am quite, as people say, I try to, laugh a lot, smile a lot, energy, positivity, and it's completely opposite to my personality. तो मुझे अपने आप को बहुत कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जिसमें मुझे बहुत रिस्ट्रेन करना पड़ता है. I have to be very understated, very low key. So for that, sometimes it becomes little. I have to prep for it so that I'm very, very calm from inside.
mentally and physically and spiritually for me to project that kind of body language and demeanor. And कुछ roles ऐसे भी होते हैं जो which are very much the way I am. So उसके लिए फिर वो इतना prep नहीं होता, तो I just somewhere there's some roles there where I just be myself and I do it and I have a lot of fun. Not that that is also easy because you know so different roles have, you know, जब मैं Ishwar I had to prep a lot, you know, when I did Ishwar. When I did Lamhe I had to really I'm not that kind of person what I played in Lamhe. और जैसे कि जो फिल्में मुझे याद आ रही हैं आसानी से मशाल जो था it came very natural to me because मैं चंबूर का था. I am brought up in that kind of an atmosphere of delinquents which were around me, you know, the kind of kids. I've grown up with those kids. So I was very fortunate that early in my career I got those kind of roles which were very much you know, it came very easy to me. Mashal, Andar Bahar, Karma, you know, these kind of films, you know, and people liked me in those characters. And then slowly and steadily, like Wo Saat Din, Beta, these kind of films, Mr. India, were very not. I had to put in a lot of thought to it. And then, of course, more important that when I get these kind of films, the writing and direction, director कौन है और writing क्या है, that is very, very important. So मेरी पूरी responsibility है. I become more comfortable when these kind of uncomfortable roles come to me, but the director has that wisdom and experience and he knows what he wants. So then I trust him and I do it. So I'm very careful when these kind of films are offered to me. I remember when Wo Saat Din released, Raj Saab ne kaha tha to he saw the film, he liked my work a lot in Wo Saat Din. And बोलो तू ऐसी फिल्में किया कर, ऐसा तो रोल कोई कर नहीं रहा, you know, these kind of roles. तो मैंने राज अंकल को कहा कि I said you were very fortunate and other directors and there were such great writers and filmmakers who were making those kind of films, you know, a very selfless, good man, nice man, you know, a decent man who is totally selfless, you know, innocent. To get that kind of innocence and that kind of purity, you need certain kind of director. Like when I did with K. Vishwanath, I did Ishwar, I was just following him. And I did Wo Saat Din में बापू साहब, I did शेखर के साथ मैंने मिस्टर इंडिया किए. तो उसमें उनमें खुद में एक बचपना है, एक मासूमियत है उन डायरेक्टर्स में. Javed Saab, when he is like a kid, he's got a sense of humor. The way he wrote it, so it became very easy. Now Subhashji is a very fun-loving, very flamboyant, has got a certain kind of body language, he loves music, he's larger than life. So I did those kind of roles with him, so I could follow him and imitate him and do those kind of films. और मेरी तारीफ हुई उनकी वजह से, उनके डायरेक्शन की वजह से I could do those kind of roles. So I've been, you know, different preps होते हैं for certain roles and certain films. But once we have a great filmmaker behind it, or a good filmmaker and good writing, then half your, or 70% of your battle is won. And then you just have to put in, you just have to work as much as you can, but the director takes care of you. So I'm basically a director's actor. So the prep depends on whom I'm working with, what role it is, from film to film. Yeah. One more question for Tilotma. Tilotma, now you've done different sort of roles in your career, and each role, like one has never been able to box you, which is great. But is that a criteria for you as well when you're considering a role, when you're offered a role? Is that one point in your mind that how different is this from the rest of the work that I've done, or does that come much later in the list of priorities? No, you're very right. The thing is, I get bored very quickly. You know, and I think it's a childhood thing because my dad was in the Air Force and every 4 years we moved to a new place and we learnt a new language, met new people, went to a new school. And of course, then I never wanted to be an actor, but I think it was a preparation you know, for the future. And I feel the same way. I played a maid in my first film, Monsoon Wedding. But the representation of of a class that is less fortunate was depicted in such a romantic, magic, realistic way. I didn't realize actually that I would have to bear the cross of having played a maid, a domestic worker, and that directors could only imagine me to play a certain class.
And initially in my career, I didn't have much of a choice. I kept taking those roles where I played marginalized characters. I played people who were from a poorer, economically impoverished background. But as my bank balance grew and as I grew older, I started feeling a sense of anger that I'm actually making money from playing a certain class that I don't belong to. I'm not poor and I'm not rich. I'm just an actor. I should be allowed to play both, you know. And it took a few filmmakers to take that risk and imagine me differently. But yes, I was definitely bored, and I love what I do. So it's really something that I thought hard about it. I had a completely different academic career planned. I left that for this because I love it, so I can't make this just a job, which I will just repeat myself ad nauseum. I can do many other things to earn money. But this is something I love to do, so it can't be boring. And I think Night Manager is also an example in that, where Sandeep imagined me to play someone who can, in a David Goliath story, you know, who can, and a character that is pitted against Mr. India. I mean, like, this is as great as it gets, no? Someone who's only done indie films. I mean, what a strange life I have. To think that in my 40s I would be, you know, you asked Mohit, I think, the pros and cons of working with Mr. Anil Kapoor. I think the pros we all know. The con was, I think, shit, I got to take him down. That's what my character, what a fun thing that was, what a ride to do that. But yeah, I would, I'd like to do things that excite me, that makes me want to wake up and go to set, you know. Yeah. Hello. This is Raj from Sansadvani Publications. Last, I want to ask रवि बहल, आज भी आपका सॉन्ग वो याद आता है, आप हमसे दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो. सो टेल अस अबाउट योर कैरियर. अप एंड डाउन आपके कैरियर में बहुत हुआ है. अप एंड डाउन तो खैर टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस इतना नहीं हुआ है, वो तो सबके करियर्स में आता है. बट हाँ, बीच में लंबा गैप जरूर ले लिया हमने. नरसिम्हा, अग्नि साक्षी, दलाल, इसके बाद बूगी वूगी शुरू हुआ. That ran for about 15 years. और जब खत्म हुआ तब मैंने डिसाइड किया कि यार अब कुछ नहीं करना. और 10 साल निकल गए. फिर लॉकडाउन आया और लॉकडाउन के दौरान मैंने सोचा यार अब कुछ करते हैं. एंड आई डिसाइडेड लेट मी गो बैक टू माई फर्स्ट लव, दैट इज एक्टिंग. एंड थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी, लुक जरा डिफरेंट हो गया, तो शुरू कर दिया मैंने. आई स्टार्टेड सेंडिंग फीलर्स एंड संदीप सर सॉ मी एंड ही लाइक द लुक. तो ये अप्स एंड डाउन्स के बारे में एक छोटी सी बात बताता हूं. 20 साल के बाद एज एन एक्टर वापस आ रहा था, तो 20 से ज्यादा, तो ऑब्वियसली थोड़े नर्व्स तो थे. तो घर पे मॉम इन लोग को, ब्रदर को, सिस्टर को मैं बोलता था यार बटरफ्लाइज तो है, थोड़ी पुक पुक हो रही है. सो दे सेड डोंट वरी यार, एक्टिंग इज लाइक स्विमिंग और साइकिलिंग, यू नो, एक बार शुरू करेगा यू वोंट फॉरगेट इट. मैं बोला ठीक है. फिर दोस्तों के साथ एक शाम बैठा, एंड यू नो हाउ फ्रेंड्स आर, तो बड़े ऑनेस्टली मैंने बोला यार थोड़ी हालत खराब है. तो एक दोस्त ने बहुत अच्छा बोला, उसने बोला कि यार एक चीज याद रख, बंदर को कुछ भी हो जाए वो गुलाटी मारना नहीं भूलता. तो ये चीज मुझे याद रही. एंड आफ्टर दैट वर्किंग विथ AK सर, मेरे आई थिंक 80% ऑफ माई सीन्स आर विथ हिम. द फर्स्ट डे ऑन द सेट आई एंटर्ड द सेट इन श्रीलंका एंड इट वॉज ह्यूज. बोला यार कहां आ गया हूं मैं. और पहला सीन इनके साथ, जानता था लेकिन जिंदगी में कभी काम नहीं किया. बट ही वॉज सो वेलकमिंग, ही वॉज सो वार्म, सपोर्टिव, कि मतलब पहला 1-8 घंटे के बाद ऐसा लगा इनके साथ काम करके कि हाँ घर आ गया हूं, आई एम बैक होम. सो दैट इज हाउ इट वॉज. एंड
it's a real pleasure now. I mean, this is definitely what I want to do. So. ना ऐसा कुछ भी नहीं है बॉस. एक्टिंग इज एक्टिंग. आप 70 mm पे करें, आप वेब के ऊपर करें. इट्स ऑल अबाउट जस्ट फीलिंग राइट अबाउट इट. और ऐसा कोई मलाल नहीं है. टुडे देयर इज अ वेरी थिन लाइन between an OTT platform and a film. So I would say lines are blurred. It's not such a big deal. And I'm very happy I got this. I loved what I did. And yes, that's how it is here. Thank you. Hello. Hi, this is Seema here. I want to ask Anil sir and Aditya, was a lot of imagination needed to play these parts? Because as Anil sir, you said that you couldn't have met a character like this in real life to prep up. And Aditya, you too. So besides a good script, also a lot of imagination went into it. Anil sir and Aditya, can you please answer? Yeah, I think with every role you try and, imagination is always required to kind of push yourself to see what is possible. I mean, part of the joy of acting is kind of the preparation for me. I love the prep that goes into everything to kind of figure out beforehand what the possibilities are. So yeah, I think Anil sir, you had a larger leap of imagination because I think arms dealers don't roam around Bandra Juhu area that often. But I was lucky enough to find a night manager that I could shadow for a while, understand that headspace a bit. My dad was in the army years ago. I picked his brain about what that life is like, and somehow over the course of my life that's always seeped into me from his stories of his past. So yes, I think the imagination is there in every role. You always try and push to see how you can shake yourself free of the things that you've always done and find something new. But yeah, I think Anil sir will have more interesting stories about the arms. Yeah, of course. You see, I want to repeat it again that, of course, first is the great book, fantastic international show, phenomenal writing, Sandeep, Priyanka, all the actors, co-actors, terrific. Couldn't have asked for anything better. And then, of course, I dived into the, that how will I be able, that now be, ये सब तो हो गया. अब अभी खुद काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी. And then, of course, I started working. So everybody has got his own way of, building his the character, emotionally, spiritually, physically, his voice, his body language. तो वो धीरे-धीरे उसको टाइम लगता है, उसको वक्त लगता है. रात को नींद नहीं आती, रात को सपने में आता है. फिर आप एक बार पढ़ते हो, फिर 200 बार पढ़ते हो, 300 बार पढ़ते हैं, फिर आप उसको बैठ के वही लाइंस को मैं लिखता हूँ, फिर मैं मांझता हूँ उसको, फिर मैं उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करता हूँ, फिर मैं राइटर को भेजता हूँ, फिर मैं डायरेक्टर को भेजता हूँ, फिर उन लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं, फिर बोलते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फिर मैं फिल्में देखता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ, फिर इमेजिन करता हूँ. And it's a process which just goes on and on and on, and it's as Tilotma said, it's so much fun, and that's what we live for, and that gives us जो खुशी, जो ना क्या, what do you do to de-stress yourself? And I feel for me, acting is my biggest distress. अगर मुझे de-stress करना है, मुझे खुश होना है, मुझे I want to look my best, I want to feel my best, मुझसे एक्टिंग करवा लो, उससे उसके ऊपर काम, उसके बारे में बात करा दो, कुछ मुझे किसी की परफॉर्मेंस देख लो. तो इसके इर्द गिर्द जितने लोगों ने काम किया था, इस किस्म का काम, इस किस्म की बॉडी लैंग्वेज, इस किस्म कहीं दूर से भी, तो मैं जहाँ से भी कहीं दुनिया की कोई भी फिल्म है, कोशिश करता हूँ कि मैं देख सकूँ. और आजकल तो हम जब हमने करियर शुरू किया तो हमको पुणे जाना पड़ता था फिल्में देखने के लिए, बिकॉज there was the archives. We used to go there and watch all the great films of Kurosawa and Ray Saab and all those films, because they were not really available. But today everything is available on the tip of the finger.
You know, you can do a lot of research, and that's the reason you can see such phenomenal work today of all the actors, Indian actors. The UK, they are on par with all the world-class actors, you know, and of course I was unfortunate that I couldn't do much of theatre, and that's my only regret कि मैं theatre नहीं कर सका. मैंने मेरे ख्याल से 2 play किए हैं, काश मैं और plays कर सकता, because that also is a great experience to be live in front of the audience and you know, perform in front of them. So that's one of my bucket list कि मेरी दोस्ती जो फिरोज अब्बास खान से भी हुई थी, हमने वो फिल्म बनाई गांधी माँ फादर, पर हमारी दोस्ती इसलिए होती कि हम प्ले करना चाह रहे थे एक साथ में, मगर वो प्ले तो रह गया. मगर so these are the things you keep on doing. So कभी कभी you do a role, you prep it like a play, you know, जैसे थिएटर में कैसे करेंगे आप, तो बोलते रहो, फिर वो जब लाइंस कैरेक्टर उसको फिर भूल जाओ जब सेट पर आते हैं, फिर डायरेक्टर, you become like a clay and you go and surrender yourself to the director, and the director molds you the way he wants it, and then because you have prepped so much, then आपको जहाँ लेके जाना चाहता है वो ले जा सकता है. उतार नीचे ले जाओ, थोड़ा अंडर प्ले करो, थोड़ा लाउड करो, थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा ऐसी लाइंस बोलो, ऐसी बॉडी लैंग्वेज करो, इसके साथ ऐसा रिएक्ट करो, ये इसका कैरेक्टर है, इसके साथ आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं. तो इसमें इट्स लाइक एन ओशन, you know, I can go on and go on and on, but everybody has different ways of you know, getting life into something which has been written in words, to get it to look, and people can relate and empathize with that character. Either they hate him or like him or love him or whatever it is. So it's and then sometimes, and you're blessed with certain face, you're blessed with certain eyes, you're blessed with certain voice. कभी आपकी आवाज़ कमज़ोर है तो आप अपने आवाज़ पे काम करते हैं. आपकी आंखें छोटी हैं, जैसे मेरी आंखें छोटी थी तो कैसे एक्सप्रेस करूँगा, मेरे बाल बहुत ज़्यादा थे, बॉडी लैंग्वेज, यू नो, कितनी चीज़ें थी, बॉडी ज़बरदस्त नहीं थी. So you just keep on working on all your minus points and try to improve yourself as much as you can. So it's I don't think one lifetime is enough for me to really, you know, really be able to do. There's so much to be done, so much to learn, and so much to look forward to in my life. Yeah. Aditya, here, this side. My question, this is Aina from Instant Bollywood. My question to you is, the last time we spoke was during Om, and you were shooting for Night Manager and Gumrah that year. As an actor, how difficult does it become for you to maintain a different essence of each character, especially when something like a Night Manager, you know, your character over there demands you to have certain nuances? Yeah, I think it's all in the writing, and if you're lucky enough to come upon something that has been written well, I think there's more than enough there to kind of draw from. Yeah, I think it's also about the choices, and it's up to you to pick things that don't feel very similar as well, which is something I try to do. But I always find that once you get to the heart of it, and if it's written well, you'll always find a different person in there, and it's up to you to be kind of conscious of trying to not make the same choices as an actor, trying to not, you know, fall back on the same. We all have a toolbox that we kind of go to when things get tough, and to not kind of resist reaching in for that thing that is tried and tested, you know, even when you're shooting. Yeah, so it's really about being honest with yourself, being conscious when you're looking at new material, to try and find a new way into it. But yeah, if you're doing your homework and something's well written, you'll always find a new character there. And obviously, if you have the great people to collaborate with, and someone, for example, in this case, it was Sandeep, who had such a clear idea of you know, the world and what he was going for. I think. Yeah, I think then you make things easier to not kind of repeat yourself. I think somewhere, if I can add, when you see something good on, you know, when you see such a good team and good, everything is positive, आपको एक sense तो हो जाता है, तो फिर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं. You know, then if you don't, and there are certain times people don't take this opportunity, and they miss out on this opportunity. So I feel everybody got this opportunity in this film, in this show, and they've grabbed it with both hands and did their best to their capacity. And now it's up to you all to decide कि जो हमने कोशिश की है और दिल से किया, क्योंकि चीज़ अच्छी थी और क्योंकि अच्छी थी तो सबने दिल से काम किया, सबने अपना आज मतलब कि, you know, we all are here because we are proud of what we have done, we are happy with what we have done.
अदरवाइज यू नो व्हाई शुड इतने सब इकट्ठे होते नहीं हैं. वेरी वेरी टफ. Today everybody is very busy, everybody has got so much to do, but when you know that you've done something really special, at least what you feel, what actually we feel, and we've done it with a lot of purity and a lot of honesty, with all this, you know, क्योंकि इंटरनेशनल शो है तो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा ना हो कि लोग बोले नहीं यार उन्होंने बहुत अच्छा किया और आपने नहीं किया. सो वी वर्क इवन हार्डर. हमारे पास वो बजट्स हैं नहीं, यू नो, द काइंड ऑफ बजट्स. एंड ऑफ कोर्स over there the actors are definitely very 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 they're so well trained. The training over there is unbelievable. All the theater actors all have done courses and are brilliant actors, like you, Laurie, and Tom. They both are both absolutely very seasoned theater actors. You know, done a lot of theater, done a lot of work. You must have seen them only in these kind of films, but उन्होंने बरसों से काम कर रहे हैं उन लोग, बहुत काम किया उन्होंने. And including she's an Oscar winner, you know, and look, you know, you're getting into her shoes. It's not so easy. Then of course Sandeep is the director. She's also an Oscar winner, Susanna, you know, and of course she's won an Oscar. And so डर तो लगता है यार, इन लोग सब ने किया और अभी यहाँ हमको जूते नहीं पड़ जाए, you know. And when people come and say that, there are a lot of people who come and they've said that it's on par, or some people obviously they're ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, don't take them so seriously. यार उससे better भी है. A lot of people have said that also, कि यार ये थोड़ा एक चीजें उसमें हैं जो हमने ज़्यादा कनेक्ट किया है इसके साथ, you know, इस शो के लिए. That makes you feel good. So that's what it is, and I think that's what the reason he says कि obviously हम सब बोल रहे हैं पेपर पे, but पेपर पे है मगर मेहनत भी बहुत की आदत है ना इस पिक्चर में. He's really worked very very hard, you know, he's really worked hard. I can, you know, and I could see his dedication and his honesty, and he was so earnest, and he, you know, कि जो मेरा capacity मैं अपना best देता हूँ, you know, I'll do my best. And of course there's a lot of room of improvement for all of us, कि we in future will do even better work. And whatever the opportunity we got, we all have tried to do, you know, our best. And I can say that about Aditya and Sobhita के बारे में क्या बोलूं, वो तो मैं बहुत तारीफ कर ही चुका हूं उनके बारे में. हाँ. Good afternoon. हाँ. She's so beautiful यार. मेरी नजर ही नहीं हट रही है. She's so attractive. Yes. She's so beautiful. She's हाँ. How beautiful she's looking. Isn't she looking nice? Right? Yes. हाँ. Yes. मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही. Good afternoon, team night manager. To your right, straight. Yeah. Good afternoon. My name is Vijay Lakshmi. I'm from Free Press Journal. My question is to Sobhita, and I have to agree with Anil, sir. It's very hard to take our eyes off you every time you come on screen. And as Kaveri in The Night Manager, it's a very glamorous role and possibly your boldest role by far. But you have always been that ever since you made your debut with Raman Raghavan. It's been 7 years, exactly 7 years of you in the business. Sobhita is someone who has gone on record to admit that you battled with confidence and esteem issues in the past, you know, as a young girl when you were growing up. What do you tell yourself when you have to play characters that you usually do in your films and shows? Because these are very bold, unabashed, unapologetic women that you portray on screen. But what's your process? What do you tell yourself? How do you bring yourself to that mind space? Good afternoon, everyone. I'm sorry about having come late. Apologies. Actually, the word battle is very strong. Sure, I grew up thinking that, okay, maybe I'm not the coolest kid on the block, and that's okay. I don't think it's so much I was struggling with it, or I was battling confidence issues. I don't think it was so steep. But I guess sometimes some of the things you say, they come out in print sounding way more aggressive. Sure, I was nerdy, and I was a very geeky kid. So for me, I just didn't think that I would naturally belong in this world because it was just so fantastical. But
through the course of my career, 7 years, like you mentioned, I've had the chance to play a variety of parts. Some pretty looking characters, some not, and I think so much is also about connecting with their conflict. When you understand what they're struggling with, or what the character is really dealing with, what are her circumstances, and you focus on that, there's a certain authenticity that comes in. And whatever, and I think I've not always played parts that are supposedly good looking or whatever. And confidence, I think, is not a destination, it's a journey. On some days you feel great, on some days you feel a bit low. Some days I feel like my merit has been validated by some bright minds like you guys, and I feel great. And on some days I'm like, shit, my life is over. I think it's okay, it's a journey. I'm very fortunate that filmmakers put their faith in me and they give me parts that are as glamorous, as intense. It's really a pleasure. I am not burdened by it. This has really been a privilege. Anil sir, being in the industry in the last 40 years, you have done incredible role. But since 2020, when there is a phase in the industry where the big films are not working, and you are part of the industry, and so what are the few things that... Please, can you repeat it again? मैं ये बोल रहा हूँ कि हिंदी में सीधा बोलता हूँ कि पिछले 2 सालों से, कोविड के बाद से स्पेशली, एक ऐसा फेज आया है बॉलीवुड में जहाँ फिल्में बहुत ज्यादा नहीं चल रही है, और जो इक्का दुक्का फिल्में चल रही वो भी ऐसी चल रही जो नॉर्मल फिल्में नहीं होती है ना? तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्या एक ऐसी चीज है जो ऑडियंस थिएटर्स में नहीं जा रही है, और क्यों बहुत ज्यादा फिल्में फ्लॉप होती जा रही? तो मैं चाहता हूँ आपका कुछ अगर पॉइंट ऑफ व्यू इस पे, कि ऑडियंस का टेस्ट चेंज हुआ है, क्या हुआ है? आई थिंक आई नीड यू आंसर्स फॉर दैट। ठीक, इसी ये मंच जो है नाइट मैनेजर के लिए, तो ये इस पे आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। तो मैं बिकॉज इतने सालों से काम कर रहा हूँ, और मेरे पिताजी भी इस फिल्म इंडस्ट्री में, तो कम से कम 60 साल हो गए कि मुझे जब से इस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बातचीत और फिल्में और एक्टर्स और डायरेक्टर्स और चलना ना चलना, ये सिलसिला तो चलता है, काफ़ी सालों से चल रहा है। तो कभी एक पैच आता है जब 2 साल के लिए ऐसी फिल्में नहीं चलती हैं, फिर लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री बंद हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये कम से कम मैं ही अपने करियर में 5-6 बार देख चुका हूँ, और ऐसा कभी होता नहीं है, ना होगा। ये जैसे हर इंसान के लाइफ में होता है उतार चढ़ाव, बिजनेस में भी होता है उतार चढ़ाव, और कभी उतार होगा कभी चढ़ाव होगा, एंड तो मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूँ कि क्योंकि इस कोविड के वक्त में मुझे लगता है लोगों ने समझने की कोशिश की है कि और मेहनत करें और अच्छी फिल्में बनाएं, और आने वाली फिल्में देखना बहुत बढ़िया होंगी और अच्छी होंगी, क्योंकि आदमी हर ज़्यादा सीखता है। जब ऐसे सिचुएशन होती है तो ज़्यादा सीखता है, और जो नहीं सीखेगा वो फिर ही हैज़ टू पे अ प्राइस। बट आई थिंक पीपल हु आर सिंसियर एंड ऑनेस्ट विद देयर वर्क एंड हु नो देयर जॉब, हु नो देयर क्राफ्ट, उनके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। उनको काम मिलता ही रहेगा और फिल्में चलती रहेंगी, और जब अच्छी फिल्म देंगे तो ऑडियंस आएगी और फिल्म देखेगी, और आपने देखा और आप देखते रहेंगे। Hi Anil sir, this is Toshiro from Radio Mirchi. Where are you? Here sir, here. So, sir, my question to you was, you have been a part of the industry for nearly 4 decades now, and अरे 4 से ज़्यादा हो गया यार, 4 मैंने वो 7 दिन को 4 decades हो गए। So, you have worked in various different forms of entertainment, and now you have also joined the night manager in the OTT space. I just wanted to know, what do you think about the emergence of OTT as a platform, not only for viewers but also for actors and the filmmakers? This is not my first, I've done it almost, कितने साल हो गए भाई? 24 को कितने साल हो गए? 8-9 साल तो हो ही गए। तो उस वक्त जब किया था वो
डेफिनेटली वॉज डन फॉर टेलीविजन, मतलब वो तो ब्रॉडकास्ट हुआ था और वो OTT पे भी रिलीज हुआ था. सो OTT का सिलसिला और ये जो छोटे पर्दे का सिलसिला एंड डूइंग एनीथिंग विच द अपॉर्चुनिटी आई गॉट, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये OTT के लिए या ये टेलीविजन के लिए या पर्दे के लिए, बड़े पर्दे के लिए. मेरे लिए ये है कि जो मेरा डायरेक्टर है, जो राइटर है, जो मेरी ऑडियंस है, उनको खुश होना चाहिए. और मुझे बिल्कुल कोई I think it's like a renaissance at the moment, it's the best time for all of us कि ये OTT का दौर जो शुरू हुआ है और जो काम का दौर जो शुरू हुआ है, इतना सारा काम है सबके लिए और इतना अच्छा काम हो रहा है और फिल्में भी बनेंगी. एंड मुझे कोई ज़्यादा बस OTT में ये होता है कि जैसे कि मैं शोभिता ही कह रही थी कि कभी कभी OTT में ये एडवांटेज होता है, टेलीविजन पे जो हम लोग बड़े शोज करते हैं जिसमें एपिसोड्स होते हैं, कहानी लंबी होती है, यू गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू प्ले द कैरेक्टर in a much more, you can make it a little more detailed and you get more time to develop your character and for storytelling, and it's great fun. उसका एक अलग ही मजा है काम करने का और कभी कभी ज़्यादा भी मज़ा आता है, फिल्मों से ज़्यादा मज़ा आता है इस पे काम करने का. मुझे एटलीस्ट I've enjoyed doing 24 and Night Manager much more than a lot of my films I've done. So गलत मेरे से मत पूछिए सवाल. मुझे तो सब सेम लगता है. बस जाना है और काम करना है, ये एंटरटेन होना है, चाहे छोटे पर्दे पे देखो बड़े पर्दे पे देखो. आई जस्ट एज लॉन्ग एज मैं सेट पर रहूँ और काम करता रहूँ और संदीप आए मेरे लाइफ में और शोभिता ऑपोजिट हो, तिलोत्मा हो, रवि बेल से कभी कभार मैं कुछ चीज़ें ले लूँ और आदित्य के साथ और काम करूँ और आप लोग आएँ और आप लोग मुझसे 40 साल से सवाल कर रहे हैं और सवाल अगले 10 साल और करते रहें और 10 चलो 20 साल मोर है सर. हाँ 20-25 सर का फेवरेट डायलॉग है शूट में, कुछ भी एक टेक बोलते सर एक टेक ले लें, बोलते हैं 20-25 लेंगे, एक क्यों लेंगे. सो 20-25 सर का तकिया कलाम है हमारे लिए. Done. Can we do a photo op? चलिए. दादा क्या बात है, बोलो. फोटोग्राफर है ये बबीता जी. साथ में बोला मचाओ मचाओ बोला. लवली बोलो.
और कुछ नहीं मिला था ले लो ले लो नहीं नहीं नहीं